All right. Welcome everyone. One more session. Today we have Sanket sir with us. He is a CMT and he also leads. He has his own company, Alphabot Capital. सर से बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज सीखने वाले हैं, which is I really want to understand it better because मैंने ये चीज मतलब it's something that I think all of us see and want in our charts. But वो इतना पेशेंस पता नहीं रह पाता या नहीं रह पाता है उनको देखने का. हम लोग बहुत ड्रॉ करते हैं, चार्ट्स देखते हैं, इधर उधर लाइंस ड्रॉ करते हैं, बट व्हाट ही इज गोना टेल अस अबाउट इज पैराबोलिक ट्रेंड लाइंस, व्हिच बाय द नेम इटसेल्फ गिव्स मी द फीलिंग कि हम लोग कुछ एक्सपोनेंशियली फटने वाली चीजें देखने वाले हैं. तो सर, द हाइक इज ऑल हियर योर्स एंड आई एम हियर टू लर्न एंड वी आर हियर टू लर्न. Thank you so much, Vishwi, for the introduction. So, yes, आज का जो टॉपिक है थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है और जस्ट टू गिव एन बैकग्राउंड अबाउट माई सेल्फ. सो आई हैव बीन यूजिंग ट्रेडलाइंस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. बहुत सारे ट्रेड मैंने ट्रेडलाइन की बेस पे ही किया. मेरे जितने भी सालों का रिसर्च इट इज ऑलवेज बीन ऑन द ट्रेडलाइन साइड. सो दिस इज अ डिफरेंट वे टू लुक एट द ट्रेडलाइंस एंड इसकी एज क्या है और इसको यूज करने का एडवांटेज क्या है, मैं उसके ऊपर आज ज़्यादा फोकस करने वाला आज के प्रेजेंटेशन पे. सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट टू लर्न. सो आई होप यू कैन सी माय पीपीटी ओवर हियर. ठीक है. सो कर्व ट्रेंड लाइंस कुछ ऐसे दिखते हैं बाय द वे. सो आई जस्ट गिव यू अ स्मॉल ब्रीफ अबाउट माई सेल्फ. तो ट्रेडिंग मैंने 2007 में स्टार्ट किया था. व्हेन आई वाज इन कॉलेज, दैट इज व्हेन आई हैड एंटर्ड एंड आई हैव बीन अप्लाइंग टेक्निकल एनालिसिस सिंस दैट टाइम. And I was also into the stockbroking business very early, 2009 till late. And I had also worked at an institutional desk in 2018 when I was managing a huge size of portfolio. That was again a trading portfolio. And it was like you can do intraday swing, all kind of trades, whichever you want day you can take. So it was something that I have managed. And then I also found my own company, Alphabot Capital, and I trade on my personal funds. That is what I do in my company. And apart from that, I also teach technique analysis. और अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडिंग सीखना है तो you can learn that from me as well. I have kept that banner under Sensible Traders. That is what my company is for the education part. Before we move forward, एक छोटा सा disclaimer. मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो जो भी प्रेजेंटेशन में हम कंटेंट देखने वाले वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, इज नॉट एनी ट्रेड और फाइनेंशियल रिकमेंडेशन. सो इफ यू आर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, यू शुड ऑलवेज मेक श्योर दैट यू कंसल्ट द फाइनेंशियल एडवाइजर बिकॉज मार्केट्स इन्वॉल्व्स रिस्क. ठीक है. शॉर्ट डिस्क्लेमर फ्रॉम माय एंड. तो आज हम जो टॉपिक सीखने वाले वो क्या है? ओके, सो दैट इज पैराबोलिक ट्रेंड लाइन. ऐसा है जो एक यूनिक टाइप का ट्रेंड लाइन है जो हमें फ्यूचर सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिराइव करने में भी हेल्प करता है. ये एक ऐसा प्रोडक्ट है या ऐसा टूल है विच कैन बी यूज फॉर स्विंग ट्रेडर्स, पोजिशनल ट्रेडर्स, इंट्राडे ट्रेडर्स, स्कैल्पर्स. आप हर एक इसे टाइमलाइन में यूज कर सकते हैं. सबसे बेस्ट पार्ट ये है. ठीक है. और ये आके एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में एक सेपरेटली एक टूल किट है विच कैन ऐड मोर पावर टू योर ट्रेडिंग सिस्टम. सो जो ट्रेंड लाइन में आपको आज दिखाने वाला हूँ मैं डेफिनेटली यूज करता हूँ, बट इट डजंट मीन दैट आई वुड यूज फ्लैट ट्रेंड लाइन्स. मैंने इतने साल फ्लैट ट्रेंड लाइन्स ही यूज किए. देन आई एम कमिंग टू दिस ट्रेंड लाइन व्हिच हैज गिवन अ लॉट ऑफ एनहांसमेंट इन टर्म्स ऑफ माय ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग. So that is what we are going to learn. And the advantage of using these parabolic or curved trend line is कि एक तो indication हमें we get the indication very quickly when the price is about to the trend is about to change. So parabolic trend line थोड़ा जल्दी सिग्नल दे देता है. ये उसका एक बेस्ट पार्ट है. सपोर्ट और रेसिस्ट भी दिखाता है which are ideally not visible on charts to many people. The parabolic trend line gives us a very good clarity on that side. It also decodes unique kind of consolidation patterns and can be used for seeing chart patterns and trading the breakouts as well. ट्रेलिंग स्टॉपर्स में भी काम आता है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इट शोज अस वेयर वी आर ऑन द रोड पे. तो ट्रेंड लाइन का फायदा ये है कि आप कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में और कौन सा लेवल जुटने के बाद मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा. सो अगेन दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू कीप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. तो वहाँ पे भी एडवांटेज है. इट शोज अस वेयर वी आर ऑन द रोड मैप. तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ट्रेंड लाइन्स एज अ टूल इतना पावरफुल है कि आपको एग्जैक्टली दिखा दे कि वेयर द प्राइस इज करंटली ट्रेडिंग है. रोड मैप पे हम लोग कहाँ पे.
सपोर्ट पे है, रेजिस्टेंस पे है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में, सो इट क्लियरली shows us where we are in the current trading scenario. This can be applied to all kind of asset classes. ये हर एक asset class में यूज हो सकता है. आप इसको कमोडिटीज में ट्रेड कर सकते हो, फॉरेक्स में अप्लाई कर सकते हो, क्रिप्टोज में अप्लाई कर सकते हो, इक्विटीज में, इंटरनेशनल इक्विटीज, हर एक टाइम फ्रेम में और हर एक एसेट क्लास में अप्लाई कर सकते हैं. दैट इज अनदर पार्ट अबाउट दिस. इसके रूल्स क्या है ट्रेड करने के, तो आई जस्ट शो यू सम पॉइंटर्स एंड देन आई विल शो यू प्रैक्टिकली हाउ टू यूज देम एंड हाउ यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ इट. सो हमें 3 टच पॉइंट्स मिनिमम चाहिए होते हैं इसे ड्रॉ करने के लिए. अब अगर आप नॉर्मल कोई भी, लाइक इफ यू आर यूजिंग अ फ्लैट ट्रेंड लाइन, you need minimum 2 touch points to make any trend line. Okay, so for parabolic trend lines you need minimum 3 touch points. That is the first and the most important rule for creating this, plotting this trend line. And you have to correct the first and the third first पहले, और फिर बाद में आपको सेकंड पॉइंट से करेक्ट करते हैं. मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा. प्राइस अगर उसके ऊपर क्लोज होता है तब उसको ब्रेकआउट बोलते हैं. प्राइस अगर ब्रेकआउट के कैंडल के हाई के ऊपर जाते तो उसको कंफर्मेशन बोलते हैं. दैट इज भाई डिराइव की ये स्टॉक अभी सीरियस ये डायरेक्शन में जाने का प्लान कर रहा है कि नहीं कर रहा है. और स्विंग लो का ब्रीच ऑपोजिट साइड में, इट मींस फेलियर्स. ओके, सो दिस आर सम रूल्स एंड आई विल बी शो यू प्रैक्टिकली. सो लेट्स check out how does it look, okay, in terms of the real world of technical analysis. So yeah, we'll go to the charts. Yeah. I hope my chart is clearly visible. Yes, sir. So first of all, before going to the depth of this entire presentation, ट्रेंड लाइन जो है, बाय द वे आई एम यूजिंग ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर, दैट इज इट मेट टॉपिक. तो ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर में अगर आप यहाँ पे जाओगे ना, आपको एक ट्रेंड लाइन का ऑप्शन दिखे. अगर ये नॉर्मल ट्रेंड लाइन है, इसको फ्लैट ट्रेंड लाइन भी बोल सकते हैं. ट्रेंड लाइन को प्लॉट करने के लिए आपको 2 टच पॉइंट्स चाहिए. ओके, सो देयर आर 2 टच पॉइंट्स, वन इज हियर एंड वन एनीवेयर ऑन द प्राइस चार्ट. तो नॉर्मली हम ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, जब भी प्राइस 2 ऐसे टच पॉइंट्स क्रिएट करने जहाँ से हमें पता चले कि सपोर्ट लेवल है, और जब भी 2 ऐसे लेवल दिखे जहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, तो जाके हम ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करके उन दोनों लोस को ज्वाइन करते हैं ताकि हमें फ्यूचर का सपोर्ट प्राइस डिराइव हो सके. राइट, सो नाउ इफ यू सी, मुझे पता है कि नेक्स्ट टाइम इसका जो सपोर्ट है वो ये प्राइस पॉइंट पे होगा. एट द सेम टाइम अगर आप रेजिस्टेंस को कनेक्ट करो तो आपको फ्यूचर में ये भी पता चलता है कि प्राइस आगे रेजिस्टेंस कहाँ पे लेने वाला है. ओके, सो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का फायदा क्या है, व्हेन आई टेल अबाउट द रोड मैप पार्ट इज कि नाउ आई नो कि ये स्टॉक इसी रेंज के बीच में ट्रेड करने का प्लान कर रहा है. अगर ये नीचे का लेवल को तोड़ेगा तो इस टर्म को हम बोलते हैं ब्रेकआउट. कोई भी स्टॉक अगर सपोर्ट को तोड़ देता है, मीन सेलर्स का डोमिनेशन ज्यादा है, और ये होने के बाद प्राइस प्रोबेबली ट्रेंड चेंज करके नीचे आ सकते हैं. और इसका ऑपोजिट है कि अगर समझो ऊपर जाके वो ब्रेकआउट यहाँ पे दे रहे, मीन्स इट इज अगेन एक्सेलरेटिंग एंड इट कैन अगेन कंटिन्यू द ट्रेंड इवन मोर क्विकली. ओके, सो ये एक बेसिक कंसेप्ट एक नॉर्मल ट्रेंड लाइन का है. अगर पैराबोलिक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है तो उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है. वो ट्विस्ट ये है कि वो ट्रेंड लाइन काफी फ्लेक्सिबल है. सो अगर आपको पैराबोलिक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो यहाँ पे व्हेन यू गो टू दिस सेक्शन, यहाँ पे शेप्स में यू विल सी अ टूल कॉल्ड कर्व, CURVE. यहाँ पे जो कर्व लिखा है, अगर मैं इस टूल को क्लिक करूँ तो वहाँ अगर आप देखोगे तो लेफ्ट पे यहाँ पे वो ब्लू कलर पहुंच चुका है, मीन वो सिलेक्ट हो चुका है. इसे प्लॉट करने के लिए मुझे, इफ आई डू वन क्लिक एंड इफ आई डू माय सेकंड क्लिक, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. तो फ्लैट ट्रेंड लाइन वाज लुकिंग लाइक दिस. कर्व ट्रेंड लाइन में देयर आर 3 टच पॉइंट्स इन साइड. ओके, तो एक पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे. ओके, सो ये ना काफी फ्लेक्सिबल है, जैसे मैंने आपको बताया. तो इसको जो सेंटर पॉइंट, अगर आप इसको ड्रैग करके ऊपर नीचे करेंगे ना, if you move it back and forward, it is very flexible, can you see? So based on the flexibility, it has again power to adapt more quickly to the price turns and price changes. ठीक है, जो फ्लैट के पास थोड़ा सा मिसिंग एडवांटेज है. आई बाय द वे आई यूज बोथ ऑफ देम इक्वली. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि फ्लैट रिलेट्स डोंट वर्क एट ऑल, दे आल्सो वर्क इक्वली गुड. ओनली थिंग इज यू शुड नो हाउ टू यूज इट. ठीक है, तो अभी हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि फ्लैट ट्रेंड और कर्व ट्रेंड में क्या डिफरेंस होता है. सो फॉर दैट एग्जांपल लेट्स टेक आई थिंक वन ऑफ द रनिंग स्टॉक्स राइट नाउ इज पॉलीकैप.
और काफ़ी ट्रेंड में है. मैं बैंक निफ्टी also will talk later on, we'll discuss that also. I'll just give you a gist about how does this entire system look like. तो जब भी आप फ्लैट ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दे रहा, तो हमें नॉर्मली 2 ऐसे टच पॉइंट चाहिए होते हैं जिसके ऊपर से हम हमारा फ्यूचर सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिराइव कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इट्स दिस इज वन ऑफ द फ्लैट ट्रेंड लाइन दैट आई हैव ड्रॉन. ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको 2 टच पॉइंट चाहिए और वो दोनों ऐसे होने चाहिए जो वीक टू वीक हो. ठीक है. सो आई नॉर्मली मेक श्योर दैट आई ड्रॉ देम एक्जैक्टली फ्रॉम वन वीक टू अनदर वीक. आई हैव आल्सो सीन पीपल डूइंग समथिंग लाइक दिस. लोग है ना बॉडी से कट करके भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. So I normally don't follow that practice of cutting the trend line through any body. ये मेरा personal preference है. So everybody has different ways to use different rules, but I mean and then that is first thing. Second thing is कि अगर मुझे इस लो के साथ इस लो को ज्वाइन करना है जो दूसरा, तो दिस इज वन ऑफ द सपोर्ट दैट आई हैड. ओके, तो मेरे 2 सपोर्ट बन गए. पॉलीकैप जब भी फ्यूचर में गिरेगा तो आई नो पॉलीकैप इज हैविंग अ गुड सपोर्ट हियर एट द लेवल ऑफ 4600. ये बेसिक टर्मिनोलॉजी हो गया ट्रेंड लाइन प्लॉट करने का और उसको ऑब्जर्व करने का ये कहाँ पे आगे प्राइस को कैसे सपोर्ट देगा. ठीक है. तो इफ आई ड्रॉइंग द सेम कर्व ट्रेंड लाइन को 3 टच पॉइंट चाहिए. ओके, तो मैंने अभी तक क्या किया था, मैंने जो भी इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट्स थे जहाँ से मार्केट हुआ है मैंने वही प्राइस पॉइंट्स को सिलेक्ट किया. ओके, नाउ वी अगेन यूज द सेम प्राइस पॉइंट्स एंड ट्राई एंड ड्रॉ द पैराबोलिक ट्रेंड लाइन and then see what is the outcome that we get. Okay, तो आपको फिर से यहाँ पे टर्शिस में जाना है. You have to choose curve. You can also keep them in your favorite toolbox if you are using it frequently. ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन देता है. When you go to curve, आपको सबसे पहले जो मैंने अभी आपको रूल बताया कि आपको फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट को कनेक्ट करना है. ओके, तो मेरा फर्स्ट पॉइंट ये है, ये मेरा थर्ड पॉइंट है. ठीक है. अभी मुझे क्या करना है, सेंटर में जो सेकंड पॉइंट है उससे मुझे पिन करके यहाँ पे लेके आना है. ओके, अगर आप अभी इस ट्रेंड लाइन को देखोगे तो पॉलीकैप कहाँ पे, पॉलीकैप इज एग्जैक्टली वेटिंग होता है ट्रेंड लाइन. ठीक है. अगर आप बेस सिनेरियो को देखोगे तो वी आर एक्चुअली ऑन अ वेरी क्रिटिकल सपोर्ट. फ्लैट ट्रेंड लाइन जो है इसकी एक लिमिटेशन ये है कि ये फ्लैट होता है तो ये मार्केट के करंट लोस के साथ वो पकड़ नहीं पाता है नजदीक से. फ्लैट ट्रेंड लाइन बोल रहा है कि सपोर्ट यहाँ पे इट्स गोइंग फ्लैट कॉन्स्टेंटली मूविंग फॉरवर्ड. ओके, पैराबोलिक ट्रेंड लाइन जो है वो एक कर्व जैसा शेप क्रिएट करता है जो आपको पहले ही बता रहा है कि अगर ये लेवल टूटा और ये सपोर्ट टूटा तो इट कुड ड्रॉप डाउन टूअर लोअर सपोर्ट विच इज एट द ब्लू लाइन. तो ट्रेंड चेंज का जो फर्स्ट इंडिकेशन है ना, आपको अगर इनिशियल स्टेज पे जो देता है वो पैराबोलिक ट्रेंड लाइन देता है. नॉर्मल केसेस लाइक इफ आई ड्रॉ 100 चार्ट्स इन अ डाउन ट्रेंडिंग और अप ट्रेंडिंग स्टॉक, कोई स्टॉक अगर ऑल टाइम हाई पे तो ये ट्रेंड लाइन आपको तो बहुत जल्दी सिग्नल देगा कि अगर आपको इसमें तो प्रॉफिट बुक करके निकलना है तो निकल जाओ, या ट्रेंड रिवर्स होने वाला है जो आपको ये ट्रेंड लाइन नहीं बता पाता है इमीडिएटली. ठीक है. सेकंड थिंग इज कि मुझे ये जो अभी ये जो पर्टिकुलर कर्व था ना, इसमें मुझे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ा और दूसरा मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना सेपरेटली. सो आई हैव टू ड्रॉ 2 ट्रेंड लाइंस टू डू दिस एनालिसिस. यहाँ पे आई जस्ट हैड टू ड्रॉ 1 ट्रेंड लाइन. वो एक ट्रेंड लाइन में मेरा काम हो गया. ठीक है. सेकंड थिंग इसके जब तक इसका ट्रेंड ऊपर है ये है ना, आगे जाके एकदम एग्रेसिवली ट्रेल करता है. So let's say if we see Polycab doing something like this in future, let's say भी यहाँ से भी सपोर्ट लेके ऊपर चले जाए तो ये ना उसको एकदम एग्रेसिवली ट्रेल भी करना है. मतलब इमीडिएट ट्रेंड चेंज का सिग्नल ये पहले देता है रादर देन दिस. सो कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन देम इज गेटिंग वाइडर एंड वाइडर नाउ. तो ये जो है एडवांटेज वो पैराबोलिक ट्रेंड लाइन के पास से मिल है. सो दिस इज यूज्ड इन टर्म्स ऑफ ड्रॉइंग सपोर्ट आल्सो, बट दिस कैन बी आल्सो यूज्ड इन टर्म्स टू ड्रॉ रेजिस्टेंस आल्सो. सो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सपोर्ट ही ड्रॉ करो, आप अगर रेजिस्टेंस को भी ड्रॉ करके हो तो आपको वो इक्वल एडवांटेज ले सकते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई एम ड्रॉइंग आई एम टेकिंग 3 रेजिस्टेंस पॉइंट्स. ओके, तो यू कैन आल्सो गो एंड प्लॉट दीस रेजिस्टेंस पॉइंट्स और अब इसको ऐसे मार्क कर सकते हो. आपको दिख रहा है वो एक्जैक्टली वहां पे रेजिस्टेंस ले रहे हैं. So now it is very near to either make or break. It has to either go on the upside or if it breaks on the downside तो इसका टाइम थोड़ा सा शिफ्ट हो सकता है. Right. Okay.
तो ट्रेंड लाइन ऑलरेडी यहाँ पे इट्स ऑन अ वेरी क्रिटिकल स्टेज. इफ यू सी RSI, बहुत सारे लोग आई एम श्योर पीपल नो अबाउट RSI. एंड RSI इज वन टेंडेंसी. जब भी मार्केट का मोमेंटम स्लो होता है, and that is when if you see divergence start taking place. Price makes new highs, higher highs, and RSI if it makes lower highs means market का जो breadth है, इसकी जो speed और momentum है वो कम हो रही है. So the moment it breaks this trend line, I am very much aware कि अभी यहाँ से मुझे या तो exit मारना है या तो if I'm only long, or if you are a reversal trader, if you're looking for shorts, you can plan your trade. So this is something which gives me an indication in advance. That is why I make use of these trend lines to get an early entry in trade. This is one of the added advantage to follow this method. That is the first thing. And let me take you to another chart. I hope इसमें एक gist मिल गया है. ये line क्या कर सकते. Okay. So let's go to everybody's favorite Bank Nifty. ठीक है, क्योंकि Bank Nifty सबसे लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं आज के टाइम में. And so we'll go to weekly chart of Bank Nifty first. We'll take a view of the higher time period also. Okay. So अगर मैं एक normal trend line draw कर दूँ, ठीक है, I'm just trying to draw a trend line from one low to another. Bank Nifty has a very good support that is at 41,800. Okay. We'll also draw one support over here. जो currently हम support के पास अभी आके everything in today's आज का जो क्लोजिंग बैंक निफ्टी का है वो यही है. ठीक है. अभी अगर आप इस कंडीशन में देखेंगे तो इट टुक अस फ्यू डेज टू अंडरस्टैंड दैट ओके वी आर गोइंग टुवर्ड्स द सपोर्ट. अगर मैं कोई भी नियरेस्ट सपोर्ट्स को लो, सी इफ आई ड्रॉ दिस ट्रेंड आल्सो वी आर फार अवे. नाउ इन दिस केस आई विल शो यू वन फ्लिप साइड. लेट्स टेक अ ट्रेंड लाइन. एक सबसे नियरेस्ट लो ये था, उसके पहले का सबसे लेटेस्ट लो ये था, उसके पहले का सबसे लेटेस्ट लो ये था. ओके, देन वी हैड दिस लो. ठीक है, so we have 3, 1, 2 and 3. So what we'll do is we'll again go to the cover trend line area. एक cover trend line लेके first point को और second point को join करेंगे. ठीक है. अगर मैं third point को and second point को center से खाली pull करके इसके nearest point पे touch कर देंगे. That's it. So now if you see Bank Nifty का trend reversal जो है वो ये वाले point पे closing पे आया था. Okay, so this day we had a fair idea कि we might touch the lower support areas. जो एक initial जो एक momentum था ना बैंक निफ्टी का, वो ये दिन पे थोड़ा momentum stall हो गया जब भी उसने trend line को तोड़ा. When I draw a trend line, now I'll go to the further rules that I shared below. Like कभी भी कोई parabolic trend line draw करते हैं, if I see कि breakout हो चुका है, वो breakout के candle के low के भी नीचे it has started trading. So then this swing high becomes extremely important for me because if it breaks this high, then I consider that trade as a failure. क्योंकि अभी वो फिर से higher high create कर रहा है and it is not in a mood to go down. तो अगर ये ऐसे करता ना तो I would have lost money in the trade. Okay, for example, that is a rule which we discussed in a BP, right? So it has not even broken the high and we are headed straight towards the trend line. कल ये trend line को specifically it will go and touch. So I personally feel कि अगर कल को भी मैं देखूँ ना बैंक निफ्टी could easily run at least score 150 points आराम से it can go and touch the trend line. Okay, so I got an early indication over here. That is the another best part. Let's go and plot the resistance also now. Resistance पे मेरे पास जो भी nearest touch points है, पहले ये था और ये भी था. So I'll join these 3 and 3 के कोई breakout या कुछ मुझे मिला था नहीं कभी. So I'm just plotting one trend line and let's see if price is reacted over here. So again I'll go and take the curve. Again I'll plot it from the third to the first और second वाले के पास में इसको pin कर दिया. Okay, so this was the area where I had the first breakout. Okay, and immediately it told me now to square up the position because ये trend line है ना काफी fast signal दे रहा है. So at this stage I knew even if I bought I still have to get out and wait for the right signal. So this early entry and this early exit does not waste our time. और अगर आपको ट्रेड चेंज भी करना है तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है आपके एंट्री और एक्सिट में. इट गिव्स यू अ क्लियर इंडिकेशन. दैट इज वेयर अगेन दिस हेल्प्स मी अलॉट. सो दैट इज हाउ आई नॉर्मली सी दिस ट्रेंड लाइन. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो करंट कंडीशन
इस हिसाब से चेंज हुए. नाउ आई विल ड्रॉ वन मोर ट्रेंड लाइन एंड शो यू व्हाट इफ यू वुड हैव ड्रॉन फ्रॉम दिस लो एज अ फर्स्ट, this as the second and this as the third. So let's draw these two trend lines. Then let's check कि यहाँ पे भी trend reversal का कोई indication आया है कि नहीं है. तो we have almost broken this trend line as well. तो हमारे दोनों कर्व्स टूट चुके हैं. तो ट्रेंड अगर चेंज होने का पहले इंडिकेशन कर्व ट्रेंड पे मिल गया तो आपके पास एक बेटर ऑप्शन है समझने के लिए कि आपको आपका आगे का ट्रेड कैसे प्लान करना. ओके, सो दिस गिव्स मी एन एडेड एडवांटेज in terms of the speed. Let's go to Nifty. अब अगर निफ्टी में जाएंगे तो निफ्टी के अंदर भी सेम स्ट्रक्चर है. लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड निफ्टी स्ट्रक्चर एज वेल. तो सेम अगर इफ आई ड्रॉ फ्लैट ट्रेंड लाइन, आई हैव हैड अ ब्रेक ओवर हियर. ओके, if I see a trend line which is broken, I normally don't keep that trend line on the chart and I remove it. Okay, अभी मुझे 3 टच पॉइंट चाहिए. फर्स्ट टच पॉइंट ये है, सेकेंड टच पॉइंट ये है, और तीसरा टच पॉइंट, अरे सॉरी, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द थर्ड एंड दिस इज द सेकेंड. सो आगे जाके निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट कहाँ पे, वीकली बेसिस में. तो यहाँ पे हमारे पास काफी बड़ा सपोर्ट के टर्म्स पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है. नाउ लेट्स गो इट सी डेली चार्ट. ओके, इफ आई ड्रॉ दीज टू ट्रेंड लाइन्स, यहाँ पे इट इज शोइंग मी अ ब्रेकआउट. अभी हम यही सेम सिनेरियो को कर्व ट्रेंड में देखते हैं कि कर्व ट्रेंड में भी ब्रेकआउट आगे नहीं था. ओके, तो मेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंड आई हैव अगेन दिस एज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज यहाँ से मार्केट ऊपर गया हुआ है. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल कनेक्ट दीज टू ट्रेंड लाइन्स और मुझे सेकंड को सिर्फ बीच वाले ट्रेंड लाइन से टच करना है. ओके, अभी आप ये ट्रेंड लाइन को ऑब्जर्व करेंगे तो डिड यू नोटिस समथिंग डिफरेंट. वी हैव हैड सपोर्ट नंबर 1, सपोर्ट नंबर 2, सपोर्ट नंबर 3, सपोर्ट नंबर 4, सपोर्ट नंबर 5. तो 5 हिट मेरे एक ही ट्रेंड लाइन पे. ओके, इफ आई वांट टू अंडरस्टैंड अ सिग्निफिकेंट ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट, आज के टाइम पे अगर मुझे कोई पूछे कि मार्केट कौन से लेवल के नीचे ट्रेंड चेंज करेगा, ओके, तो ये जो लाइन है मेरी 19,400 भी, ये यहाँ से 200 पॉइंट तक अभी भी ट्रेंड जो निफ्टी का है वो ऊपर है. इफ वी गो एंड सी अ ब्रेक, then we are heading for a longer fall moving forward. ठीक है, क्योंकि हमारे पास और कोई पीछे इतने बड़े significant support के ranges बचे नहीं है. So this breakdown might lead Nifty to go more on the downside. So now let's see the resistance part. Okay, तो resistance पे हमारे पास जो points है वो कहाँ पे. Okay, so let's understand them first. तो सबसे पहला point ये है. Second point that I have this. Okay, थर्ड पॉइंट मेरे पास उसके बाद में सीधा ये है. ओके, तो अभी हम इसी सिनेरियो में सेम रेजिस्टेंस को प्लॉट करते हैं. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल कनेक्ट द थर्ड एंड द फर्स्ट एंड आई विल ब्रिंग इट डाउन टू द सेंटर ऑफ सेकेंड. अभी आप देखोगे तो ये रेंज कैसा है, इट इज एग्जैक्टली ट्रेडिंग बिटवीन अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बट इन अ वेरी डिफरेंट मैनर. इसकी जो ट्रेंड लाइन है वो आगे जाके आपको दिख रहा है स्क्वीज हो रही है. So if we don't break this in Nifty, then we might do something like this. So at any point of time, it has to make or break. So it can remain in this period for a while, and then probably you might see an uptrend. अगर ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो ऊपर करेंगे, अगर नीचे ब्रेकआउट हुआ तो वही हिसाब से ट्रेड करेंगे. We can't predict कि ब्रेकआउट कहाँ पे होने वाला है, but at least I have a understanding, where I am currently trading and which condition I am in. Yes, so I have a range of 20,200 and नीचे में 19,400. If you break हो सकता है in terms of the positioning side. So again, this is how this helps me. ठीक है, तो मुझे ये फ्लैट ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट था ना, उसके बदले मुझे कर्व ट्रेंड लाइन ने बचा लिया. We added support. These supports, issue it is these are very very difficult to fight for. people who are using flat lines and all. तो अगर आप देखोगे कि अगर कोई ट्रेंड लाइन पे 5 बार सपोर्ट ले रहा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट उसको बहुत हेवीली रिस्पेक्ट कर रहा है. इफ मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, मीन्स देयर आर सो मेनी पीपल हु माइट बी वाचिंग दिस डायरेक्टली इनडायरेक्टली, एंड इट इज वाइब्रेटिंग वेरी वेल टू दैट सेम लेवल ऑफ ट्रेंड लाइन. सो अनदर थिंग इज कि लेट्स से अगर ये टूट गया
तो फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इनटू द माइंड कि चलो अगर ये ब्रेक हो गया तो मार्केट टूटेगा कहाँ तक. Okay, that is the first question. So there are two ways. If you are using classic chart patterns for your trading, तो चार्ट पैटर्न में एक सिस्टम होता है टारगेट्स निकालने का. वो ये है कि आप कोई भी अगर लेट्स से ट्राइंगल है, ओके, तो ट्राइंगल का जो बेस होता है ना, वो बेस टारगेट होता है. ठीक, दिस इज बेसिक practice of technical analysis. If you read any books or you'll be able to find out how to pick target. So same thing can be used in this parabolic areas as well. तो अगर आप पैराबोलिक ट्रेंड लाइन देखते हो तो पैराबोलिक का जो बेस होता है ना, वो बेस का साइज दैट सर्व्स एज अ गुड टारगेट एरिया. तो अगर नीचे ब्रेक होगा तो इट कुड ट्रैवल डाउन टिल 18400. दैट इज द डाउनसाइड टारगेट. इफ यू ब्रेक ऑन द अपसाइड देन निफ्टी कुड अगेन कंटिन्यू इट्स टारगेट टिल 21200, 21300 के आसपास. तो जब भी किसी भी कंसोलिडेशन का जो बेस होता है, दैट बेस सर्व्स एज द targeting method for me. If I see it breaking on the upside, for example, अगर कैंडल ब्रेक ऊपर करेगा तो स्विंग का लो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ब्रेक्स द स्विंग लो और लेट्स से इफ इट ब्रेक्स अ कर्व ट्रेंड लाइन लाइक दिस, देन दैट इज माय एक्सिट पॉइंट. सो एंट्री मैं ब्रेकआउट के बाद इनिशिएट कर दो. ब्रेकआउट होता है, कैंडल का हाई ब्रेक होता है फिर, और एग्जिट मेरा अगर कोई भी मेरी कर्व ट्रेंड लाइन नीचे से आ रही है और वो ब्रेक होती है, सो दैट इज वेयर आई प्लान माय एक्सिट. So entry also जल्दी मिलता है, and at the same time exit also I get very fast. And second thing is कि अगर मैं इसके ऊपर अगर फ्लैट ट्रेंड लाइन डालूँ तो मेरा एंट्री जितना ज़्यादा प्राइस टाइम कंज्यूम करेगा ना कंसोलिडेशन में, उतनी मेरी एंट्री डिलेड होती जाएगी फ्लैट ट्रेंड लाइन. आउट ट्रेंड लाइन विल गिव मी अ ब्रेकआउट एट 19,800, वेयरएज फ्लैट ट्रेंड लाइन मुझे ब्रेकआउट देगा 20,800 पे. राइट, तो इतना डिफरेंस आ गया. राइट, एंट्री और एग्जिट. So this is another, method to go and use this type of trend lines. And one more thing, the question will obviously come to the viewers: कि intraday में use हो सकता है कि नहीं? Okay, so if we go and see intraday, let's take an example. One of the stock that was moving up very fast recently was Jubilant. ठीक है, तो ये जो स्टॉक है अगर इसके intraday चार्ट पे जाते हैं, let's go to any time frame, 15 or 38, whatever. Okay. So if I go to a 15-minute chart, now again I have so many high lows that are, available at this point. Okay. So first of all, what I'll do is I'll connect the resistance. तो मेरे पास सबसे recent में ये resistance था, उसके बाद मेरे पास ये था, उसके बाद मेरे पास ये resistance था. ये तीन important highs clearly visible है. ठीक है. So what we'll do is we'll go and take the curve. We'll plot it from the third to the first one. और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेगा बिकॉज आई हैव टू मेक श्योर दैट आई कनेक्ट द थ्री ट्रेंड लाइंस परफेक्टली. नाउ व्हेन दे आर कनेक्टेड परफेक्टली, यू कैन सी कि यहाँ पे एक आर्क शेप ऑलरेडी डेवलप हो चुका है. इसके ऊपर अगर जुबिलेंट फूड ब्रेक करे तो प्रॉब्लम इट हैज मोर चांसेस टू मूव ऑन द अपसाइड. सो वील गेट द ब्रेकआउट वेरी अर्ली इन टर्म्स ऑफ द एंट्री पॉइंट. इफ आई वुड हैव टेकन अ फ्लैट ट्रेंड लाइन, मेरा एंट्री यहाँ पे आएगा. So almost 10 rupees का difference है. Right. 10 rupees is a very huge deal. Yeah. And same thing, let's say if I draw trend lines which were there in past. So let me just go and see nearest supports. मेरे ये तीन है, ठीक है. So I'll go and draw these trend lines as well. और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मुझे कोई फ्यूचर में सपोर्ट भी मिल रहा है. तो if I see support are also very far. So sometimes we should this one thing that we have to make sure कि अगर आपको कभी कभार ऐसे सपोर्ट मिलेंगे जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ओके, एंड दे माइट नॉट बी प्रैक्टिकल बिकॉज स्टॉक उतना फास्ट उठेगा नहीं. बट इफ यू सी द सिनेरियो, वी आर डूइंग समथिंग sort of this. Am I audible? Yes, you are, sir. Okay. Oh, sorry. I thought I missed you. Okay. Great. So this is how you can also use the same technique in intraday. Okay. Any time frame, and you can apply it to any particular asset class. Like let's say, for example, let's go to gold now. We can go to gold and this is international gold. ठीक है, तो हम अभी इस कंडीशन में इवन इफ वी आर इन 30-minute chart, still this can be applied very well. तो अगर ये 30 मिनट का चार्ट है, and just taking whichever lows which were there available recently,
और मुझे इसको सिर्फ ये पॉइंट से कनेक्ट करना है। तो आपको दिख रहा है गोल्ड भी अभी करंटली ट्रेडिंग अबव द ट्रेंड लाइन पैराबोलिक यू नो पे। तो गोल्ड का भी जो इंटरनेट ट्रेंड है वो इसके नीचे चेंज होगा 1936 के नीचे $10 डाउन इट माइट गिव यू अ ब्रेकआउट। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे इट इज कंटिन्यूसली ट्रेलिंग इटसेल्फ। So any asset class you can go and deploy this method, provided you first do some practice. This will give you a very better idea about how to do it. That is how normally I make use of these systems. Awesome, awesome. This is very interesting. So I had seen this tool एक आध बार लगाने की कोशिश भी करी थी, but this is clearly very well, you have very well researched it. So this gives a very fresh perspective on how to use. I have seen this, I've tried to apply it, but I was never been able to use it. I've never been able to use it. So thank you so much for this, matlab, and this was an excellent presentation. Matlab, from entry, exit, risk, target, SL, हर चीज I think you have covered it very well. I'm sure लोगों को बहुत मजा आएगा ये देखने में, आया होगा अभी जब देख रहे होंगे वो लोग. And also I also realized कि I'm sure this is not the only thing that we can learn from you. तो प्लीज और भी टॉपिक्स इसी टाइप के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम लोग और आपसे सीखना चाहेंगे. एंड प्लीज डू अलाउ अस टू होस्ट यू अगेन फॉर दिस. Thank you so much, Vijay. Thank you so much. It was a pleasure, talking to the audience and connecting with you guys. Awesome. Great.